Hello everyone. Welcome to Legal Darshan. In today's video, we are going to talk about section 111 of the BNS. Now, your Bhartiya Nyaya Sanhita, for which we call it BNS, it has few new sections inserted in it. Section 111 is one such section which speaks of organized crime. Now, you need to understand that it is the first time we are defining organized crime ever in the penal laws. Okay, so organized crime has never been defined, it was not a part of IPC. So, it is first introduced in Bhartiya Nyaya Sanhita only. Now, Section 111, it speaks any continuing unlawful activity. Now, I'm going to mark the keywords here. All right. So, and the explanation gives the meaning of the keywords, right? So, any continuing unlawful activity, including, so the word here is including, which means that this list is not exhaustive. इनके अलावा भी और भी कोई एक्टिविटीज हैं जो एक continuing nature में हैं और जो unlawful हैं. Okay, so you need to remember the two words continuation and unlawful. Okay, so any continuing unlawful activity including kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, economic offense, cybercrime, trafficking of persons, drugs, weapons, or illicit goods or services, human trafficking for prostitution or ransom by any person or a group of person acting in concert, singly or jointly, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion, or by any other unlawful means to obtain direct or indirect direct material benefit, including a financial benefit, shall constitute organized crime. कोई भी ऐसा क्राइम कोई भी ऐसा एक्ट जो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है अनलॉफुल है विच इज इंक्लूसिव ऑफ किडनैपिंग चिल्ड्रन और रॉबरी विच इज व्हीकल थेफ्ट लाइक हम देखते हैं कि व्हीकल में एक गैंग होता है समटाइम्स ऑन द रेड लाइट दे कम दे डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ ड्राइवर एंड अनदर पर्सन along with that person he steals something from the vehicle or maybe attack the person in the vehicle and steal something. Then there is extortion. जैसे बहुत सारे जब आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो रूरल एरियाज में देयर आर लैंड डीलर्स जो कि एक्सटॉर्ट करते हैं, लैंड ग्रैब कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके लोगों को मारना, जिसको हम मूवीज में देखते हैं कि सुपारी देना, सुपारी देके मारना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग, काला बाजारी करना, साइबर क्राइम्स करना, ट्रैफिकिंग करना लोगों की, बिकॉज वी ऑफन हियर इट इन न्यूज जस्ट कि जैसे ड्रग रैकेट्स होते हैं एंड देयर आर ट्रैफिकिंग रैकेट्स, देयर इज प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स. सो one person is not organizing it. So these kind of offenses may be organized in the continuing nature. हमारे पास हमारे penal laws में अलग से किडनैपिंग का पनिशमेंट है, अलग से रॉबरी की पनिशमेंट है, एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में we consider it a homicide or a murder. Economic offenses के लिए हमारे पास corruption act है, prevention of corruption act, prevention of money laundering act. Cyber crimes के लिए हमारे पास IT act है. Also we have some of cyber crimes penalized in BNS as well, IPC as well. Trafficking is also criminalized. Oh, all right, drugs we have an act, and weapons, illicit goods we have Arms Act, TADA Act. We have acts for separate offenses. Kidnapping as a separate offense, robbery as a separate offense. But what if this activity is coming in continuation? How do we take care of it? How do we consider it? So for that, IPC here is with the intention of a section named organized crime, not IPC, BNS, of course, Bhartiya Nyaya Sanhita. Now the question arises कि हमने इस सेक्शन में बहुत सारे टर्म्स को यूज कर लिया. ठीक है, we have used, I'll change the color for better visibility. Now we have used many terms. For example, we have choose the word continuing, we have choose the word unlawful, we have chosen the word organized crime syndicate. Okay, how do we
define them. What does these words mean? Because with organized crime coming as a new section, all of these words are also being used first time in the IPC only, right? Sorry, BNS. Now let's move to, yeah. Now let's just move to the explanation. So the first is organized crime syndicate. Your organized crime syndicate means, yeah, organized crime syndicate means a group of two or more persons, two or more, okay? The word here is two or more persons who either acting singly or jointly as a syndicate or a gang indulge in any continuing unlawful activity. So the key ingredient of this section is, key feature of this section is the act should be continuous plus unlawful to be called as an organized crime. Okay, now the next definition is organized crime syndicate means yeah. So there is yeah, so there is a car. All right. Now there is a car, there is a driver sitting in. So one person comes from here. ठीक है, he asks कि sir मुझे आप XYZ hospital का address बता दो. Now this person, when he tries to tell the address, another person comes and steals something from his car, or maybe steals something from his pocket. All right, and this is how two people are working. Now if there was only one person who comes and who hit this person and take away his wallet, then it would have been done singly. But jointly means दो लोग साथ कर रहे हैं, single means कोई person अकेले कर रहा है. लेकिन चाहे आप single कर रहे हो, चाहे आप jointly कर रहे हो, आप एक organized crime syndicate का part हो अगर, तो that will call, you will be called as a part of organized crime syndicate only. क्योंकि you are doing that act, you are performing that continuous unlawful act on behalf of your syndicate only. Okay, हम लोग डेली लाइफ में हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, चोर बाजार से सामान आ जाता है, चोर बाजार यहाँ पर है, चोर बाजार इधर है. Now that चोर बाजार, you can actually see it sometimes as a syndicate, जहाँ पे चोरी का सामान लाके बेचा जाता है. So even that is a syndicate, because there is an association of few people. A gang is being run by somebody जो कि सामान चोरी करके ला रहे हैं, जो कि लोगों की पॉकेट्स, हम कहते हैं पॉकेट मार के ले जाते हैं, जो कि चोरी करके ले जाते हैं, स्टील करके ले जाते हैं, एंड दे सेल दोस थिंग्स आउटसाइड. सो दैट इज, अब वो एक पर्सन करे या दो पर्सन करे, तीन पर्सन करे, दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट ओनली, बिकॉज that kind of activity is continuous as well as unlawful. Okay, now the next definition is continuing unlawful activity only. So it is means exhaustive definition. It means that an activity which is prohibited by law, which is a cognizable offense punishable with imprisonment of 3 years or more, undertaken by any person either singly or jointly as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate. See, I was telling you that या तो वो काम एज अ मेंबर ऑफ सिंडिकेट किया गया हो कि मैं उस सिंडिकेट का मेंबर हूं, देन आई एम डूइंग दिस वर्क, या ऑन बिहाफ ऑफ दैट सिंडिकेट किया हो. फॉर एग्जांपल, यू माइट नॉट बी द पार्ट ऑफ द सिंडिकेट बट यू कैन स्टिल वर्क फॉर देम. सो दैट विल ऑल्सो बी अ कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन एक्स है जो इस सिंडिकेट का पार्ट नहीं है, but this person, he threatens people and he coerces money out of people and give it to syndicate. Now he is acting on behalf of syndicate. All right, so even if he is doing that, he is coercing money out of people, this is also a continuing unlawful activity, right? Now continuing unlawful activity means an activity prohibited by law
which is a cognizable offense punishable with imprisonment of 3 years or more. So all the cognizable offenses, your cognizable offenses are there, were there in your CRPC schedule. They are also in your IPC, BNS, when you see the description. So all the cognizable offenses which have punishments of equal to greater than 3 years, then that will be योर अनलॉफुल एक्टिविटी एंड वो अपटेकन की गई है किसी भी पर्सन से, या तो अकेले या किसी के साथ, या फिर एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, या फिर syndicate के behalf पे, and in respect of which more than one charge sheets have been filed before a competent court within the proceeding period of 10 years, and that court has taken cognizance of such offense and includes economic offense. नाउ अगर इस पर्सन एक्स की जो अभी हम बात कर रहे थे जिसने मनी कोर्स किया है, अगर उसके खिलाफ एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल की गई हैं किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड, चाहे वो कोर्जन ऑफ मनी हो, चाहे वो काला बाजारी हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, देन दैट विल बी fall under falling under your or your unlawful continuing unlawful activity. All right, so and the period is 10 years preceding 10 years, यानी कि अगर आज इस person X के against मैं complaint file करती हूँ, all right, now if I go back and I see that ये पिछले 10 सालों में इसके अगेंस्ट चार्जशीट है एंड कोर्ट ने उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया है कि yes this offense he has, he can be convicted for that offense, or maybe he can be tried for that offense, for a matter of fact, which also include your economic offense, then in that case, this will be a continuing unlawful activity. So you need to remember that offense क्या है? ऑफेंस, जब हम अनलॉफुल ऑफेंस की बात कर रहे हैं, इसमें अनलॉफुल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी है वो जो कि कॉग्निजेबल हो और जिसकी पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा हो. एंड जब हम कॉन्टिन्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ कॉन्टिन्यूएशन इज दैट the person against which you are taking action, either who is a member of a syndicate or acting on behalf of the syndicate, उसके अगेंस्ट पिछले 10 सालों में एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल की गई हो और कॉग्निजेंस लिया गया हो बाय द कोर्ट ऑन दैट ऑफेंस, एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड इकोनॉमिक ऑफेंस. नाउ यू आर सीइंग द स्कीम ऑफ दिस सेक्शन. एक डेफिनेशन से हम दूसरी डेफिनेशन पे जा रहे हैं. फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारी थी, एक्सप्लेनेशन जो हमारा था, इट वाज सिंडिकेट, इट वाज अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट. उसमें हमारा वर्ड कौन सा आया? उसमें हमारा वर्ड आया अनलॉफुल कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी. सेकेंड डिफिनेशन हमने उसकी की. एंड थर्ड अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑफेंस की. ओके, सो इकोनॉमिक ऑफेंस, यहाँ पे वर्ड क्या यूज है? इंक्लूड्स, यानी कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट इंक्लूसिव लिस्ट है कि ये सब तो होंगे, इनके अलावा भी और चीजें हो सकती हैं जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस मानी जा सकती हैं. So it includes criminal breach of trust, forgery, counterfeiting coins or currency notes, banknotes and government stamps, हवाला ट्रांजेक्शन. हवाला ट्रांजेक्शन होता है बेसिकली ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना. In a single bottom line, hawala means to convert black money to white money. All right, mass marketing fraud, running any scheme to defraud several persons. For example, लक्ष्मी चिट फंड वाला केस जो कि बहुत फिर हेरा फेरी मूवीज में use होता है, हेरा फेरी मूवी में यूज हुआ है. So that is one of the example of mass marketing or running any scheme to defraud several person or doing any act in any manner with a view to defraud any bank or financial institution. डिफ्रॉडिंग ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने लोन ले लिया और आप उस भारी लोन को लेकर बैंक से इंडिया से फ्लाई अवे कर गए एंड यू हैव नो प्रॉपर्टीज लेफ्ट इन इंडिया. सो दिस इज एन इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग. ऑलराइट, और एनी अदर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग मॉनिटरी बेनिफिट्स इन एनी फॉर्म. कोई भी ऐसा काम जो कि गैर कानूनी है, जो कि पैसों के फायदे के लिए किया जा रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए किया जा रहा है, एंड इट इज इलीगल prima facie, that will be included in your economic offense. So your economic offense will also include your offenses like money laundering, hawala transaction, etc. All right, now these were the important aspects of this section. Now doing the explanation
we can now come back to the section once again. So now we know the meaning of what continuing unlawful activity is. Now we know what an organized crime syndicate means. And now we know what economic offense is. Rest other offenses, I think you must be knowing, because kidnapping, you know, it's a defined offense. Robbery, it's a defined offense. Vehicle theft is a very common practice in our surroundings, in our everyday life, कि एक person आता है address पूछता है और दूसरा person pocket से wallet निकाल के चला जाता है. This is vehicle theft. And also vehicle theft is basically, yes, this is vehicle theft. Then you are और vehicle को चुरा लेना, extortion कर लेना, land grabbing, contract killing, I told you, सुपारी देके मरवाना या मारना. Cyber crimes we know, trafficking we know, drugs, weapons, illicit goods we know, human trafficking we know, prostitution we know. All right, so more or less we know what these offenses means, but we need to know what continuing unlawful activity and organized crime syndicate and your economic offense are meant under this particular section. तो हमें अब ये समझ आया कि कोई भी पर्सन जो अनलॉफुल कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, या बीइंग अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, या ऑन बिहाफ ऑफ इट अकेले कर रहा है, किसी के साथ कर रहा है, देन ही इज डूइंग एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ऑल राइट. नाउ अब जो भी फर्स्ट सबसेक्शन वाज अबाउट व्हाट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज. हमें पता चल गया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज समथिंग व्हिच इज अफेक्टिंग द सोसाइटी एट लार्ज. नाउ जो भी इसको कमिट करेगा उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, मतलब पिनलाइजेशन क्या है. अगर उस सॉरी उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से if the victim dies, if there is a death of victim, then that person will be punished with death or life imprisonment and along with 10 lakh rupees fine. Okay, 10 lakh or more. एंड अगर देर इज नो डेथ ऑफ द विक्टिम, डेथ नहीं होती बट नुकसान होता है, देन इस केस में 5 years जो है मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड इट ही शेल ऑल्सो बी लाइएबल टू फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 5 lakhs. ओके, दिस इज कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम में कॉन्विक्ट हो रहा है, या तो उसकी वजह से डेथ हो रही हो या फिर डेथ ना हो रही हो, तो ये दो तरह की पनिशमेंट्स जो हैं दीज आर प्रिस्क्राइब्ड. नाउ नेक्स्ट इज कि अबेट, अगर कोई अबेट कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, कॉन्स्पायर कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम को, या फिर एंगेज भी कर रहा है प्रिपरेशन में. सी दिस सेक्शन मेक्स श्योर that even if you are participating in a preparation of organized crime, then also that is an offense. ओके, हम जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ होते हैं, हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल बट अटेम्प्ट इज एंड कमीशन इज. बट हियर प्रिपरेशन इज ऑल्सो पनिशेबल. तो कोई भी अगर अबेट कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, कंस्पायर कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, हार्बर कर रहा है, उस एक्ट को होने के लिए होने दे रहा है, एंगेज कर रहा है कोई भी प्रिपरेशन में, तो उस केस में भी देयर विल बी अ पनिशमेंट. आपने वो एक्ट नहीं किया बट आपने या तो उसे अबेट किया या उसकी प्रिपरेशन में हेल्प किया, कॉन्स्पिरेट किया है, तब भी आपकी पनिशमेंट जो है वो 5 साल से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड हो सकती है. एंड यू विल ऑल्सो बी लाइएबल फॉर अ फाइन ऑफ 5 lakh rupees or more. Minimum, this is minimum. All right, now let's move ahead. Now any person, fourth subclause says, fourth subsection says any person who is a member of organized crime syndicate. Now, जो भी एक organized crime syndicate का member है, he will be punished with a term not less than 5 years, which may extend to imprisonment of life, and fine shall not be less than 5 lakh rupees. Now, अगर आप member भी हैं, now I will take you back to the concept of अनलॉफुल असेंबली. जब हम अनलॉफुल असेंबली पढ़ते हैं तो उसमें इवन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, you are not involved in the preparation, you are not raising slogans, standing in the unlawful assembly, you are not doing anything, but still you will be liable. Same is the situation with organized crime syndicate. Now let's take an example. A B C D E F, this is a crime syndicate. A B D E, they go, they loot a bank and they come back. Now police catches them and they disclose that C and F are also the member of our group. इस activity में C and F involved नहीं थे, they had zero involvement, but just because they were the member of this syndicate,
they will also be punishable. So being a member of such syndicate is illegal per se, and it is punishable as well. All right. Now, next is whoever intentionally harbors, conceal any person who has committed the offense of an organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, which may extend to imprisonment for life, shall also be liable to fine, which shall not be less than 5 lakh rupees. तो अगर आप किसी भी सिंडिकेट के मेंबर को हार्बर कर रहे हैं या ऑफेंडर को हार्बर कर रहे हैं जिसने ऑफेंस किया है ऑर्गेनाइज क्राइम का, देन उस केस में, और उसको छुपाना चाह रहे हैं, देन उस केस में आप भी लायबल हो जाएंगे. Punishment is minimum is 3 years of imprisonment, which may extend to lifetime, and which may extend to imprisonment for life, and you shall also be responsible for fine not less than 5 lakh rupees. It could be more, but minimum is 5 lakh rupees. Now, any section that comes for harboring, any section that penalize harboring the offender, there is always an exception. The exception is concealment or harboring by spouse. Because in our country we see marriage as a sacrament. अगर spouse ही अपने spouse को protect नहीं करेगा तो कौन करेगा? All right, so spouse, it's we read marriage as जन्मों का रिश्ता, and we read marriage as an eternal union. So IPC and BNS, even in IPC it was an exception, even in BNS it is an exception, कि अगर आप अपने स्पाउस को हार्बर कर रहे हो, आप अपने स्पाउस के क्राइम को छुपा रहे हो, then you will not be liable, because that is what is generally expected from a spouse, right? Any spouse would do that. Now next is, yes, now next is whoever possesses, next, whoever possesses any property derived or obtained from commission of an organized crime or proceeds of any organized crime, or which has been acquired through the organized crime, shall be punishable with the imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but may extend to imprisonment of life, shall be liable to fine which shall not be less than 2 lakh rupees. Now कोई भी अगर आप मॉनिटरी गेन्स, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मॉनिटरी गेन से कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी पैसा है, कमीशन है, जो भी आपको मिल रहा है उस ऑर्गेनाइज क्राइम के होने से, देन और आपके पास वो पाया जाता है, इवन दो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, बट यू आर डिराइविंग बेनिफिट्स आउट ऑफ द एक्ट done by the syndicate in way of an organized crime, then you shall also be liable. Minimum imprisonment is 3 years, extendable to life imprisonment, and you shall also be liable to a minimum fine of 2 lakh rupees. It may be more. Now, the last clause, last subsection 7, it says if any person on behalf of a member of an organized crime syndicate is or at any time has been in possession of movable or immovable property, which he cannot satisfactorily account for, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but may extend to imprisonment for life, and also be liable to fine, which shall not be less than 1 lakh rupees. Now, one of the problems with hawala transactions, with money laundering, all of these things was that people जो इन सब corruption में, जो money laundering में या जो हवाला में involve होते थे, they for the fear of not being you know not be for the fear of not being traced, वो क्या करते थे, अपने relatives, अपने दोस्तों के पास they used to keep the money. अब अगर सीबीआई को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पता चलता है कि दिस पर्सन ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ सिंडिकेट बट ही इज होल्डिंग सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ सिंडिकेट, then the investigating agency, be it investigation officer, be it CBI, be it any agency which is relating to investigation, they may ask that person how will you account for this particular property, and अगर वो person उसका satisfactorily जवाब नहीं दे पाता है तो ये मान लिया जाएगा कि दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट ओनली, क्योंकि तभी तो आपके पास वो ट्रेस करके आए हैं, एंड देन ही विल नॉट बी पनिशेबल, ही विल बी पनिशेबल फॉर एन इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 3 years, एक्सटेंडेबल टू 10 years. नाउ हेयर ओनली इज 3 to 10 years, बाकी सब क्लॉजेस में आप देखेंगे तो एक्सटेंडेबल टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, and shall be liable for fine more than or equal to 1 lakh rupees. The minimum fine is here. Okay. So this is
Organized crime, a new section or in your BNS. In our next video, we will talk about section 112, which is the petty organized crime, which is also a newly added section. And after that, we will proceed to few more sections that have been added. One of them is terrorism. So terrorism is 113, Terrorist Act. Now it is interesting to note that Terrorist Act has not been defined anywhere before, especially when I talk about international laws. So when we were studying international laws, one of the research question that we all wanted to look into was that terrorism is not defined. How do you define if an act is terrorism or not? So India BNS here, BNS in India, it made a significant effort to compile a definition of what terrorism or what terrorism or what terrorist act should be. So we will, in our further videos, we will specifically look into the new additions to the substantive criminal law in our country. Till then, I hope you like this video. Please stay tuned with us on Legal Darshan. For any feedbacks, queries, requests, you may write us at legaldarshana@gmail.com. So this is our contact ID, legaldarshan@gmail.com. For one-on-one mentoring sessions related to CUET, CLAT PG, CLAT UG, or APO exams, you may contact us as well. Thank you, everyone. Hope you have a nice day. See you soon.